آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں آ رہی ہے آواز. سر ماشاء اللہ اسمارٹ دکھ رہے ہیں آپ اس کے. میری آواز چل رہی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। आ रही सर, आ रही। ओके, थैंक यू। हाँ, किसी ऐप शुरू करेगा फिर कुरान तिलावत, किसी ऐप शुरू कीजिएगा तो कुरान तिलावत भी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। किसी कुछ दुआ ही उससे करेगा, कुरान की किसी ऐप शुरू करेगा बिस्मिल्लाह करके, फिर तिलावत भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ मिल रहा है, दोनों मिल रहा है।
ایک آدمی بیٹھے گا. شروع کریں سر. کیسے شروع کریں؟ ہاں ہاں. شروع کریں سر. جی شروع کریے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. صدر شعبہ ماہیت الامراض اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے حد عزیز ڈائریکٹر پروفیسر عبدالودود صاحب، اساتذہ کرام اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہیت الامراض کی عصری اہمیت پر منعقد اس نیشنل ویبینار میں تمام ہی شرکاء اور حاضرین کا پرجوش بدن انسانی کی اعلیٰ ترین صحت اور علاج و معالجے کے حصول کے لیے جہاں طب کے دیگر مضامین اہمیت کے حامل ہیں، وہیں ماہیت الامراض کا بھی اپنا ایک منفرد مقام ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اس موضوع کو کی حیثیت حاصل، کیونکہ اسباب و علامات کی تعین اور جسم میں ہونے والی غیر طبعی تبدیلی کے علم کے بغیر امراض کی تشخیص و دفاع کے لیے اختیار کیے جانے والے اقدامات کی مثال ریت کی کشتی کھیلنے جیسی. یہی وجہ ہے کہ یونانی کی اسباب و علامات اور امراض کی ماہیت مرضی سے متعلق قدر سرمایہ موجود ہے، اس کی ڈور تھام کر ہی تشخیص اور علاج کی جانب پیش قدمی کی راہیں سلجھائی جا سکتی. یہ سچ ہے کہ دور جدید میں ہونے والی ترقیات اور آلات و دیگر و مسائل کی فراہمی نے، لیکن یہ بھی سچ ہے قدیم تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر محض اپنی فکری نہج اور فلسفیانہ روش کی بنیاد پر ایسی نویں روشنی کر رکھی ہیں جن سے کسب فیض کرنے پر آج کی دنیا مجبور ہے. حقیقت یہی ہے کہ طب بس ہمیں انہیں ریسرچ و تحقیق کے لیے دستیاب جدید پیمانوں سے گزار کر ان کی افادیت کو ثبوت کے دنیا کے روبرو پیش کرنے کی جسارت پر معمور ہونے کی ضرورت ہے. آج کا یہ ویبینار پر سب سے پہلے ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالودود صاحب کو چند کلمات کہنے تھے، لیکن
وہ کسی اہم میٹنگ میں مشغول ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ان سے استفادہ کریں گے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. آواز کلیئر نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی. معزز احباب گرامی، اس اہم ترین افتتاحی معزز احباب گرامی، ڈائریکٹر صاحب کی عدم موجودگی میں اب اس کے کہ ہم اپنے مقررین کی طرف رجوع کریں. آئیے ہم شعبہ ماہیت الامراض نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے صدر، ایک انتہائی باکمال اور جناب پروفیسر اس کو بات کرو کوبرا سے اور ان کے حریب میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ خطبہ کے ساتھ اس ویبینار کے اغراض و مقاصد پر بھی روشنی ڈالیں. میں آپ کی شان میں کہنا چاہوں گا، چاندنی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاندنی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، اس کا ہے کتنی روشنی. مراد پروفیسر پروفیسر چند کلمات ہمارے شرکا اور مہمانوں کو خدمت میں نوازیں. ہلو. عتیق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی اب تو آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ایک روزہ قومی ویبینار بعنوان طب یونانی میں ماہیت الامراض کی اہمیت کے آرگنائزنگ چیئرپرسن وہ نیم ڈائریکٹر نیم مینس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن عالی مرتبہ جناب پروفیسر عبدالودود صاحب، اساتذہ کرام، ہم اثروں، طلباء و طالبات اور ملک کے مختلف حصوں سے سمعی و بصری مواصلاتی نظام سے جڑے ہوئے تمام افراد کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. شعبہ ماہیت الامراض کا قیام نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن میں 2018 میں ہوا. یہ شعبہ یونانی طب کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق جسم کی غیر معمولی حالت یعنی امراض کے مطالعے سے ہے. یہ جسم میں ہونے والی ساختی و فعلی تبدیلیوں سے متعلق ہے. اس شعبہ کے قیام کا مقصد امراض کی ماہیت المرضی کی وضاحت، تحقیق اور فہم ہے. یہ ڈپارٹمنٹ پی جی اسکالر کی اعلیٰ معیار کی تدریس اور لیب ٹریننگ فراہم کرتا ہے اور مستقبل کے ہنرمند افراد کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے. یہ شعبہ اس موضوع کے بہتر تفہیم کے لیے باقاعدگی سے سیمینار، جنرل کلب اور سمپوزیم کا انعقاد کرتا ہے. اس سرگرم عمل ہے. اس کے علاوہ شعبہ کے فیکلٹی ممبران تحقیقی مقالوں اور کتابوں کی اشاعت میں بھی پیش ہیں. ڈپارٹمنٹ کی پانچ طالب علموں کا پر مشتمل پہلا بیچ فارغ ہو کر درس و تدریس میں اپنے کارہائے نمایاں کے ذریعے شعبہ کا نام روشن کر رہے ہیں. فی الحال شعبہ میں 17 پی جی اسکالر اپنے اپنے تحقیقی مقالوں کو تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم عمل ہیں. آپ لوگوں کا زیادہ مزید وقت نہ لیتے ہوئے قومی ویبینار میں شامل ناظرین و سامعین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور اس ویبینار میں لیکچر دینے والے اساتذہ ڈاکٹر عطاء اللہ فہد اور ڈاکٹر عزیز الرحمان کو میں درون قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मौजूद हाज़रीन, खुतबे इस्तक़बालिया के बाद हम प्रोग्राम की असल की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज मेहमान मुकर्रिर की हैसियत से डॉक्टर अताउल्लाह फहद साहब जैसे गरां कदर इल्मी शख्सियत की मौजूदगी का शर्फ हासिल। आप तिब्बे यूनानी के मायनाज इदारे अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में शोमे इल्मुल अमराज में तदरीसी खिदमात की अंजाम दही पर मामूर है। आपको 17 सालों का तवील तदरीसी और तहकीकी तजर्बा हासिल है। मुल्की व बैनुल अक़वामी रसायल व जरायद में आपके तकरीबन 40 मकालात शाये हो चुके हैं, जो मिक़दार व मियार की बुनियाद पर तिब्बे यूनानी की बेहतर नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मुल्की व बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस व सेमिनार में मकालात पेश करने के साथ साथ आपने इनवाइटेड लेक्चर्स के जरिए भी तिब के फ़हाम व तफ़हीम का फरीज़ा अंजाम दिया है। आज आप सबने मुफरिद और दुसूमत दम की रोशनी में फरते तदस्सुम में तिब्बे यूनानी की मानवियत पर अपने गरां कदर ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं निहायत खुलूस के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस अहम मौजू पर लबकुशाई की जहमत उठाएं। मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा, हम नहीं बादे सबा तेरे करम के मुहताज, हम नहीं बादे सबा तेरे करम के मुहताज, हम तो खुशबू में बिखरने का हुनर जानते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अताउल्लाह फहद साहब से। बराए करम आप अपनी पेशकश पेश करें। डॉक्टर सादिक, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपका। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। Organizing chairman of this webinar, Professor Abdul Wadud Sahab, organizing secretary Professor Abid Ali Ansari Sahab, इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे डॉक्टर सादिक अली साहब, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माहियतुल अमराज, साथी असातिज़ा और तलबा और तालिबात। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर एक वेबिनार का इनेकाद किया। तिब्बे यूनानी में माहियतुल अमराज की क्या इफादियत है और ये किस तरह से तिब्बे यूनानी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये एक बहुत अहम मौजू है जिसको आपने उठाया। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, बिलखुसूस प्रोफेसर आबिद अली अंसारी साहब का, जो मेरे बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं, कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे मेरी राय रखने का एक मौका दिया। सही बात तो यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन होने के नाते तिब्बी बरादरी को इस इदारे से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इदारे ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और इसी के जानिब ये वेबिनार एक कदम है कि तिब्बे यूनानी का फ़रोग और उसकी तरवीज और इशाअत में किस तरह से अहम किरदार निभाया जाए। तो बहुत शुक्रिया तमाम ऑर्गेनाइजर्स का। इसी के साथ मुझे जो मौजू दिया गया है, मैं उस मौजू को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि वो इस लेक्चर को डिलीवर किया जा सके। डॉक्टर सादिक, क्या मेरी स्क्रीन जो है विजिबल है?
डॉक्टर सादिक? जी सर, विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू। जी सर, जी सर, जी। ओके ओके ओके। तो मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है यूनानी मेडिकल अप्रोच टू डिसलिपिडीमिया विद रेफरेंस टू दुसूमत दम एंड सिमन मुफलित। मैं एक बात यहाँ अर्ज करता चलूं कि एक इस्तिलाह अमराज गैर मुदव्वना जो पिछले 2 दहाई से खास तौर से हम देख रहे हैं कि तिब्ब यूनानी के मुहक्किकीन में इसका जिक्र बहुत ज्यादा है। बुनियादी तौर पर अमराज गैर मुदव्वना वो अमराज हैं जिनका तिब्ब यूनानी में जिनके असबाब, उनकी अलामात, उनका उसूल इलाज, उनका तदारुक, इसके बारे में जिनकी तफसीलात तिब्ब यूनानी में नहीं मिलती हैं, उन अमराज का शुमार अमराज गैर मुदव्वना में किया जाता है। किसी इल्मी महफिल में ये तस्करा हुआ कि क्या डिसलिपिडीमिया को हम अमराज गैर मुदव्वना में शामिल कर सकते हैं या नहीं शामिल कर सकते हैं, तो वहां से ही कभी माहियतुल अमराज के प्लेटफॉर्म से अपने अहबाब से कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिले तो इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू किया जाए, ताकि अगर ये अमराज गैर मुदव्वना में है, अगर इसकी रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी जो है वो यूनानी मेडिसिन में एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, तो हम सबको मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अमराज की पैथोफिजियोलॉजी एज पर यूनानी लिटरेचर हम तैयार करें और वो असासा यूनानी का एक असासा हो, ताकि आने वाले वक्तों में इस डिपार्टमेंट की जो खिदमत है, माहियतुल अमराज की जो खिदमत है, वो मजीद उनको और बढ़ाया जा सके। तो लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैंने 3 डिवाइड किया है। पहला ये है कि डिसलिपिडीमिया का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया जाए। डिसलिपिडीमिया का एप्लीकेशन जो है वो क्या है, डिसलिपिडीमिया से किस तरह के अवारजात लाहिक हो सकते हैं उसको बयान किया जाए। डिसलिपिडीमिया का वर्ल्ड पे बर्डन क्या है, उस बर्डन का तस्करा हो। इसमें हिंदुस्तान में इसके मरीजों की शरह क्या है उसकी बात हो, और उसके अलावा डिसलिपिडीमिया में किन किन चीज़ों को देखा जाता है इसका तस्करा हो। तिब्बे मगरिब डिसलिपिडीमिया को कैसे डील करता है इसकी बातें होंगी। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दसूमत दम और सिमन मुफरित, ये 2 इस्तिलाहात हैं। अगर हम अपना यूनानी असासा देखें तो हम देखते हैं तकरीबन तमाम असातीन तिब ने इस मौजू पर अपनी आरा का इजहार किया है, और जिस तरह से इस मौजू को उन्होंने मुतफर्रिक मकाम इनका तस्करा किया है। जैसे कभी तो इनकी उमूमी बहस की है, और कभी किसी इलाज के ज़िम्न में इनका तस्करा किया है, कहीं किसी मर्ज की माहियत पर गुफ्तगू करते वक्त इसके बारे में बात की है। तो यकजा तौर पर किसी एक जगह पर यूनानी का सरमाया इकट्ठा हमें नहीं मिलता, बल्कि दुसूमत दम और सिमन मुफरित का तस्करा जगह जगह यूनानी असासे में बिखरा हुआ मौजूद है। तो उसको समझा जाए, उसको देखा जाए कि यूनानी अतिब्बा ने दुसूमत दम और सिमन मुफरित का जो कंसेप्ट पेश किया है वो एक्चुअली क्या पेश किया, उन्होंने क्या समझा था और उन्होंने उसको किस तरह से हमारे सामने रखा है। फिर उसके बाद ये देखा जाए कि क्या डिसलिपिडीमिया और सिमन मुफरित का जो तस्वुर है, इन दोनों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, इन दोनों में कुछ इख्तलाफात हैं। उन दोनों को सामने रखते हुए डिसलिपिडीमिया की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, और इस्टेब्लिश करते वक्त हमारी नज़रों के सामने तिब्ब यूनानी का जो असासा सिमन मुफरित और दुसूमत दम के ताल्लुक से मौजूद है, उसकी रोशनी में डिसलिपिडीमिया की पैथोफिजियोलॉजी मुतय्यन की जाए। मैं अपने तमाम शरका से यहाँ ये बात कहता हुआ चलूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है और मेरी ज़ाती सोच है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिसलिपिडीमिया की किस तरह से मुतय्यन की जाए। इस तरह के वेबिनार का, इस तरह के प्रोग्राम्स के इनेकाद का एक मकसद ये भी होता है
کہ اہل علم اپنی باتیں وہاں رکھیں اور اس پر نگیٹو پازیٹیو جو بھی کمنٹس ہو ان کمنٹس پر تبصرہ ہو اور پھر اسی کی روشنی میں اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے. ہو سکتا ہے کہ میرا جو مشورہ ہو اس میں کچھ کمیاں ہیں اور یقیناً ہوں گی، تو اہل علم سے میری گزارش ہے کہ مجھے اس سے آگاہ کریں اور اپنے مشوروں سے مجھے نوازیں تاکہ اس کام کو اور بہتر انداز میں کتابوں میں کتابی شکل میں یا مضامین کی شکل میں اس کو بہتر انداز میں سامنے لایا جا سکے. تو سب سے پہلے ڈسلیپیڈیمیا کا کیا کنسپٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. بیسیکلی لائپوپروٹین کا جو استحالہ ہے اس استحالے کی بے اعتدالی کے نتیجے میں لائپوپروٹین کے جو خون کے اندر ان کی موجودگی ہے اس بے ترتیبی یا بے اعتدالی کو ڈسلیپیڈیمیا سے تعبیر کرتے ہیں. ایک اور اصطلاح اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ہائپر لپیڈیمیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ڈسلیپیڈیمیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہائپر لپیڈیمیا اور ہائپو لپیڈیمیا دونوں شامل ہوتی ہیں. لیکن جب ہم ہائپر لپیڈیمیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائپوپروٹین کا لیول سرکولیشن میں بڑھا ہوا ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. لائپوپروٹین کی جو ڈس آرڈرس ہوتی ہیں ان ڈس آرڈرس میں کچھ لائپوپروٹینس تو سرکولیشن میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ امراض کا موجب ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک لائپوپروٹین ایسا بھی ہے جس کا گھٹی ہوئی مقدار، جس کی ڈیکریزڈ لیول سرکولیشن میں امراض کا موجب ہوتی ہے. تو ڈسلیپیڈیمیا کا تصور، ڈسلیپیڈیمیا کا کنسپٹ، ڈسلیپیڈیمیا کا جو اصطلاح ہے یہ زیادہ اپروپریٹ ہے کیونکہ یہ ہائپر اینڈ ہائپولیپیڈیمیا دونوں کو کور کرتا ہے. ہم تمام یہ ماہیت الامراض میں یہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں کہ لپڈس، میجر لپڈس جو ہمارے سرکولیشن میں ہوتی ہے وہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس ہوتی ہیں. اور یہ دونوں میجر لپڈس یعنی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس یہ چونکہ واٹر انسالوبل ہوتی ہیں لہذا سرکولیشن میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس فری فارم میں ٹرانسپورٹ ان کا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ سرکولیشن سے ٹشوز میں، سیلس میں ان کا انتقال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ واٹر انسالوبل ہوتی ہے. تو ٹرانسپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان میجر لپڈس کو واٹر سالوبل بنایا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت ایک اسفیریکل مائکرو مالیکیول بناتی ہے جس کو ہم لائپوپروٹین کہتے ہیں. اور اس لائپوپروٹین میں اس کا جو کور ہوتا ہے، اس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈس اور کولیسٹرول کے ذریعے سے بنتا ہے. اور اس مائکرو مالیکیول کا جو پیریفری ہے یا اس کی جو سرفیس ہے، کور کی جو سرفیس ہے وہ سرفیس مونو لیئر سرفیس ہوتی ہے جس میں فاسفولپڈس، فری کولیسٹرول اور ایپولائپوپروٹینس یہ انکارپوریٹڈ ہوتی ہیں. اور یہ ایپولائپو اسفیریکل مالیکیول جس کے ڈائیگرام آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں، اس اسفیریکل مالیکیول کی جو سرفیس ہے اس کی سرفیس واٹر سالوبل ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کا جو پولر اینڈ ہوتا ہے وہ پولر اینڈ سرفیس کے اوپر ہوتا ہے اور نان پولر اینڈ جو ہوتا ہے وہ کور کی طرف ہوتا ہے. تو پولر اینڈ چونکہ ہائیڈروفلک ہوتا ہے اور نان پولر اینڈ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے، اس وجہ سے جب لپڈ اس مائکرو مالیکیول یعنی لائپوپروٹین کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو سرکولیشن میں یہ واٹر سالوبل ہونے کی وجہ سے سرکولیشن میں آسانی کے ساتھ موجود رہتی ہے اور دوران خون سے ٹشوز تک، سیلس تک اس کا انتقال آسانی سے ہو پاتا ہے. تو یہ ہے لائپوپروٹین کا ایک اسٹرکچر. اگر ہم دیکھیں تو ڈسلیپیڈیمیا انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اصل میں ٹیکنیکل ایشوز اس طرح کے پروگرامس میں آتے رہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کنٹینیو کرتا ہوں. ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ لائپوپروٹینس جو ہے یہ لائپوپروٹین کے ساتھ جو ہماری میجر لپڈس ہیں یہ بلڈ سرکولیشن میں دوران کرتی ہیں
तो मेजर लाइपोप्रोटीन की जो क्लासेस हैं, उनकी जो टाइप्स बयान की गई हैं, उसमें काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL, LDL एंड HDL, ये मेजर लाइपोप्रोटीन की क्लासेस हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सर्कुलेशन से सेल्स की तरफ रवा दवा रहती है। काइलोमाइक्रॉन जो है, इसमें तकरीबन 90% ट्राइग्लिसराइड्स होता है, और ये सबसे साइज के एतबार से देखें तो ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लाइपोप्रोटीन है, लेकिन ये लीस्ट डेंस होता है। मैं यहाँ पर इस बात को जिक्र करता चलूँ कि जब हम लाइपोप्रोटीन्स की बात करते हैं और उनकी डेंसिटी की बात करते हैं, इसी के आगे आने वाला है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो डेंसिटी इसकी इस तरह से तय होती है कि जिस लाइपोप्रोटीन का कोर जितना बड़ा होता है, उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है। कोर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, उसकी डेंसिटी जो है वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। पहले काइलोमाइक्रॉन, फिर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो लाइपोप्रोटीन का कोर है, उसका साइज जितना बड़ा होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स उससे रिलीज होती चली जाएंगी और उसका साइज छोटा होता जाएगा, वैसे ही उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो डेंसिटी की बुनियाद पर ही ये मेजर लाइपोप्रोटीन की क्लासेस की गई हैं। तो काइलोमाइक्रॉन का बेसिक जो इसका काम है वो क्या है, एक्सोजेनस लिपिड्स को ये सेल्स तक ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डाइटरी फैट जो लेते हैं, और उस डाइटरी फैट में जो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है, उसको इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट कर देती है, काइलोमाइक्रॉन में उस लिपिड को शामिल कर लेती है। अब ये काइलोमाइक्रॉन जो है, ये लिम्फेटिक्स के जरिए से थोरेसिक डक्ट तक आता है, और थोरेसिक डक्ट के जरिए से सर्कुलेशन में शामिल होता है। सर्कुलेशन में आने के बाद क्या होता है कि सर्कुलेशन में जो कैपिलरी एंडोथीलियम है, उस कैपिलरी एंडोथीलियम पर लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस मौजूद होती हैं। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस क्या करती हैं, लाइपोप्रोटीन का ब्रेकडाउन करती हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करती हैं। तो जो काइलोमाइक्रॉन सर्कुलेशन में आया है, उस पर लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस एक्ट करते हैं और उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मजीद उस पर और एक्ट करते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस, और उस ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस जो है वो फ्री फैटी एसिड्स में कर देते हैं। ये फ्री फैटी एसिड्स जो होती हैं, यही वो फ्री फैटी एसिड्स हैं जो एडिपोज टिश्यूज और मसल सेल्स में मसल सेल्स और एडिपोज सेल्स इसको ले लेते हैं और अपने अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के शक्ल में इसे जमा कर लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर तवानाई की जो इनकी जरूरत है वो इसी के जरिए से पूरी होती रहती है। अब काइलोमाइक्रॉन जिन पर लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस ने अपना एक्शन किया था और उनसे ट्राइग्लिसराइड्स को अलग कर लिया था, उस काइलोमाइक्रॉन का साइज अब छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स से अलग हो चुकी है। तो ये जो छोटा काइलोमाइक्रॉन है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स जिससे अलग हो चुकी है, वो काइलोमाइक्रॉन रिमेनेंट कहलाता है, बचा हुआ काइलोमाइक्रॉन। तो ये रिमेनेंट काइलोमाइक्रॉन इसका क्या होता है, ये लीवर में जाता है, और वहां पर चूंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स इससे अलग हो चुकी हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल लीवर उसको जो है यूटिलाइज कर लेता है, उसकी जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसके जरिए से वो इस्तेमाल हो जाता है। यानी कुछ हार्मोन्स में इस्तेमाल हो जाता है, कुछ विटामिन में इस्तेमाल हो जाता है, और कुछ जो है बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। तो काइलोमाइक्रॉन जो है, ये मालूम हुआ कि जो एक्सोजेनस लिपिड्स है, जो हम खाने में जो लिपिड्स लेते हैं, वो लिपिड्स काइलोमाइक्रॉन के जरिए से दौरान खून में आते हैं, और दौरान खून में इनका ब्रेकडाउन लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस के जरिए से होता है, और फिर ये ब्रेकडाउन के बाद फ्री फैटी एसिड के शक्ल में पेरिफेरल सेल्स में चले जाते हैं, और वहाँ इनका यूटिलाइजेशन होता है या स्टोर हो जाते हैं। और बकिया मादा जो काइलोमाइक्रॉन है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रॉन ये लीवर से ले लेते हैं और उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। दूसरा जो मेजर लाइपोप्रोटीन है वो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जिसका फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है। और ये VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी लीवर से लेकर के ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो कि लीवर में फॉर्म होते हैं, ये वहां से इसको लेकर के पेरिफेरल टिश्यूज तक जाती है, यानी एडिपोज सेल्स और मसल सेल्स तक लेकर के जाती है। और इन सेल्स पर जो है उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो इसके जरिए से वो उसको ले लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में अगर देखें तो जो लीवर है, इससे देखें आपके LDL जो है उसके पार्टिकल्स
जो लीवर में बनते हैं वो सर्कुलेशन में आते हैं। सर्कुलेशन में आने के बाद इन पर भी लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस का एक्ट होता है और वो जो है एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और फिर फर्दर वो उनका ट्राइग्लिसराइड्स और कम होता है, उसके नतीजे में वो एलडीएल में कन्वर्ट होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। ये जो एलडीएल होती है, इस एलडीएल की सरफेस पर एपोलाइपोप्रोटीन बी मौजूद होती है, जो कि स्पेसिफिकली लाइगेंड का काम करता है। इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये एलडीएल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के जरिए से ये एलडीएल एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स के अंदर एलडीएल चली जाती है, और वहां जाने के बाद उसकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। एलडीएल बेसिकली 55% टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल ही है, जो एलडीएल के जरिए से लीवर से 55% जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो सेल्स के अंदर इसी के जरिए से जाता है। तो एलडीएल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एलडीएल की बढ़ी हुई मिकदार जो है खून में, अगर इसकी मिकदार बढ़ी हुई है एलडीएल की, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स हैं, जिन हेपेटिक सेल्स पर इस एलडीएल को अटैच होना है, उनकी जो रिसेप्टर्स है उसमें या तो कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, या उनके फंक्शन में कोई, उन रिसेप्टर्स के फंक्शन में कोई डिफेक्ट है, जिसके नतीजे में उस एलडीएल को वो जो है अपने साथ अटैच नहीं कर पा रहे हैं, लाइगेंड को अपने रिसेप्टर से अटैच नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा एलडीएल जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रही है। और एलडीएल सेल के अंदर जाने के बाद उसका भी यही होता है कि उसकी जो एनर्जी के लिए सेल यूज करते हैं उसे यूज कर ले जाते हैं। लेकिन अगर एलडीएल सेल के अंदर ना जा पाए, उसकी बढ़ी हुई तादाद खून के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। एलडीएल भी और इसका जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो और से निकल जाता है, तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाती है और वो एचडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एचडीएल का काम क्या है कि एचडीएल जो है ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स में, यानी एडिपोज सेल्स में और मसल सेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, उस जमाशुदा कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल का काम यह है कि उन सेल्स से उन कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर अपने अंदर ले लेता है, और फिर ये एचडीएल उस कोलेस्ट्रॉल को लेकर के या तो आईडीएल के थ्रू या डायरेक्टली लीवर में जाता है और वहां उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो 4 स्पेशल क्लासेस हैं इसकी, काइलोमाइक्रोन, बीएलडीएल, एलडीएल एंड एचडीएल, वो लाइपोप्रोटीन की ये 4 क्लासेस। अगर हम डिसलिपिडीमिया की एपिडेमियोलॉजी देखें कि इसकी क्या, वर्ल्ड में इसकी क्या शरह है और हिंदुस्तान में इसकी वजह से कितने मरीज होते हैं, तो बहुत अहम बात यह है इसमें आप नोट करें कि तकरीबन इस्केमिक हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड जो डिसलिपिडीमिया है उसमें तकरीबन 0.5% से ज्यादा केसेस, यानी 50% से ज्यादा केसेस आईडी के ऐसे हैं जिसमें डिसलिपिडीमिया जो है वो पाई जाती है, और स्पेशली जो है एलडीएल लेवल उनका जो है वो बढ़ा हुआ होता है। मोर देन 4 मिलियन डेथ्स अकर एवरी ईयर, इसकी वजह से डेथ जो है हर साल इतने होते हैं। और हिंदुस्तान में शहरों और गांवों में अगर देखा जाए तो 25 से 30% शहरी और 15 से 20% जो देहात के इलाके में के लोग हैं वो इससे मुतासिर होते हैं। ये इस बात को शो करता है कि डिजीज बर्डन जो है वो दुनिया पर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी जो है इसके बारे में बात करने की जरूरत है, और इस पर जो है इसके इलाज और इसके तदारुक पे बात करने की और समझने की जरूरत है। डिसलिपिडीमिया की एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें अगर तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की होती है। प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि जिसके असबाब का हमें पता नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट के नतीजे में, एग्जैक्ट जो उसका जेनेटिक डिफेक्ट के नतीजे में, लिपिड मेटाबॉलिज्म के जेनेटिक डिफेक्ट के नतीजे में ऐसा होता है। और सेकेंडरी का मतलब ये है कि नॉन जो उसके असबाब है, उन असबाब की वजह से लिपिड लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाते हैं। खासतौर से इसमें सैचुरेटेड फैट है, अगर ये हमारी डाइट में ज्यादा हो, और अक्सर देखा जाता है कि जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं उनमें सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा लेते हैं, तो उनमें इसके लेवल्स बढ़े हुए ज्यादा मिल सकते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत ताइश की जिंदगी है, फिजिकल एक्टिविटीज कम है। इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड डायबिटिक्स, ये वो असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर ये देखा जाता है कि जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ये बेतदाली इनकी सामने आती है। अगर कोई लिपिड डिसऑर्डर है तो उसको हम कैसे उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ब्लड में अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब समझा जाए कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए एक अहम रिस्क फैक्टर है, यानी
कोरोनरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज के पैदा होने के चांसेस हैं और उसके अवारदात सामने आ सकते हैं। सीरम ट्राइग्लिसराइड्स की अगर बात करें कि अगर ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में बढ़े हुए मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आईएचडी का रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में ये रिस्क फैक्टर यानी आईएचडी के इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए उतना अहम फैक्टर नहीं है, लेकिन उससे कम है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये इसके नतीजे में हो सकते हैं, ये इसको शो कर सकता है। इसी तरह से एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का तकरीबन 55 to 60% कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। ये एलडीएल की बढ़ी हुई लेवल एथेरोस्क्लेरोसिस का जो है स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, यानी इसकी बढ़ी हुई मौजूदगी उम्मन एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। और उसके अलावा ये बात नोट करने की है, एलडीएल की बढ़ी हुई मिकदार जो है वो ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक, डायबिटीज, स्मोकिंग, इसमें ओबेसिटी को खास तौर से याद रखने की जरूरत है कि ओबेसिटी में एलडीएल की लेवल जो है वो बढ़ी हुई मिलती है, एसोसिएटेड होती है। एचडीएल, जिसमें कि 20-30% टोटल कोलेस्ट्रॉल का होता है, एचडीएल का काम यही है कि रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी पेरिफेरल टिश्यूज से, पेरिफेरल सेल से कोलेस्ट्रॉल को लेकर के लीवर में जाता है ताकि फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए। तो इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कहते हैं, और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि एलडीएल के जरिए से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एथेरोजेनिक होता है, इसीलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि ये एथेरोजेनेसिस का अगेंस्ट काम करता है, और कार्डियो प्रोटेक्टिव हम इसको कह सकते हैं, या एथेरो प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन हम इसे कह सकते हैं, इसीलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। डिस्लिपिडीमिया के जरिए जो अवारदात पैदा हो सकती है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत अहम है, इसकी तफसील की जरूरत नहीं है, तमाम अहबाब अच्छी तरह समझते हैं। इसी तरह से मायोकार्डियल इस्कीमिया के नतीजे में होने वाला एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन कार्डियक डेथ, जो कि इसी के नतीजे में हो सकती है, डिस्लिपिडीमिया के नतीजे में, स्पेशली जब कोरोनरी हार्ट डिजीज की हम बात करें, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो उसके नतीजे में। इसी तरह से अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है ये अगर सेरेब्रल वास्कुलेचर में मौजूद हो तो उसके नतीजे में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और स्ट्रोक तक का नौबत आ सकती है। तिब्बे मगरिबी में इसकी जो मैनेजमेंट बताई गई है वो दो तरह से कही कि एक तो इनिशियल मैनेजमेंट है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इनिशियल मैनेजमेंट में अगर देखें तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी उस डाइट का इस्तेमाल जिसमें कि सैचुरेटेड फैट ना हो बल्कि अनसैचुरेटेड फैट्स हो, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन्स, तो ये इस तरह के गज़ाओं का इस्तेमाल इसके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसका तदारुक किया जा सके। उसके अलावा जिस्मानी वर्जिश, ये मॉडरेट टू वाइग्रस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी 3 to 4 times a week फॉर एटलीस्ट 40 minutes अगर हम करते रहें तो ये इस पर काबू पाया जा सकता है। और अगर इससे काबू नहीं पाया गया तो इसके साथ साथ जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स है वो स्टेटिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिपिड लोअरिंग सब्सटेंसेस कहलाती हैं। तो ये तो तस्करा था कि अगर हम डिस्लिपिडीमिया का कंसेप्ट क्या है, डिस्लिपिडीमिया किस तरह से जो है, क्या वारदात इसके होते हैं, इसको किस तरह से समझा जाए, उसका एक तस्करा था। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट पर आता हूँ जो सिमन मुफरित और दसूमत दम के ताल्लुक से है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यूनानी लिटरेचर में मुख्तलिफ मकामात पर सिमन मुफरित और दसूमत दम के ताल्लुक से तस्करा पाया जाता है। किसी एक जगह पर तमाम चीज़ों को यकजा तौर पर नहीं देखा जा सकता बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसे देखा जाता है, और जब उन मवाद को आप इकट्ठा करेंगे, उसको एक साथ देखेंगे तो उससे जो नताइज निकल सकते हैं वो आपके सामने है। इस सिलसिले में दसूमत दम और सिमन मुफरित और दसूमत दम या डिस्लिपिडीमिया के या उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए, आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। क्या सादिक, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज पूरी आ रही है, आवाज आ रही है। बीच में किसी ने इंटरप्ट किया, मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो उनके यहाँ प्रॉब्लम होगी, आपकी आवाज आ रही है। ओके कंटिन्यू सर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इब्ने रुश्द का यह बयान किताबुल कुल्लियात में हमने देखा, और आप उसका अभी स्टडी करें तो समझेंगे कि डिस्लिपिडीमिया के ताल्लुक से इस फाजिल हकीम ने बड़ी शानदार बात कही। ये चर्बी के ताल्लुक से जिक्र करते हुए कहते हैं
अजसाम حیوانی میں چربی کا فائدہ گرمی پہنچانا ہے. چربی کی افادیت بتا رہے ہیں کہ چربی سے جسم میں گرمی پہنچتی ہے، یعنی جو حرارت غریزیہ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ حرارت غریزیہ کو چربی سے جو ہے مدد ملتی ہے، اور حرارت غریزیہ اپنے تمام افعال کو اس کے ذریعے سے انجام دیتی ہے. مثلا سرد، غذائے سرد میں چونکہ چربی شامل ہے اس لیے احشاء کو گرم رکھتی ہے. چربی اس پختہ خون کا فضلہ ہے جس سے اعضاء غذا حاصل کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابن رشد یہ کہتے ہیں کہ چربی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب خون پوری طرح سے نضج حاصل کر چکا ہوتا ہے. خلط دم جو ہے اس میں جب پوری طرح سے پختگی آ جاتی ہے تب اس کا فضلہ تیار ہوتا ہے. اور وہ فضلہ کیا؟ وہ فضلہ چربی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چربی کی زیادتی خون کے فضلے کی زیادتی ہے، اور چربی کی کمی خون میں پختگی کی کمی ہے. تو اس بات کو مزید آگے بڑھتے ہوئے اس کہتے ہیں کہ چربی اس پختہ خون کا فضلہ ہے جس سے اعضاء غذا حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر خون پختہ ہوگا تبھی یہ چربی موجود ہوگی. خون اگر پختہ نہیں ہوگا تو چربی اپنی مقدار میں کم ہوتی چلی جائے گی، چربی کی جو پیدائش ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی لیے جاندار میں اس کا اعتدال کے ساتھ ہونا صحت اور اچھی غذائیت کی دلیل ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی بھی جسم میں چربی کا اعتدال کے ساتھ ہونا اچھی غذائیت کی دلیل ہے. اور جن جاندار میں چربی نہیں پائی جاتی ہے ان میں خون کی پختگی عمدگی کے ساتھ نہیں ہوتی. چربی جن میں کم ہو یا نہ پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خلط دم میں کمی ہے. ان کا خلط دم جو ہے اس کے جو استحالاتی تبدیلیاں ہیں خلط دم کی، وہ پختہ پوری طرح سے نہیں ہو پائی ہیں، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اس لیے اس میں چربی بن نہیں پائی ہے. اسی لیے ان میں یہ فضلہ یعنی کہ چربی نہیں بن پایا، بلکہ ان کے اجسام میں اعضاء کی ضرورت سے کم غذا پہنچتی ہے. یعنی جتنی غذا بدلے ما تحلل کے طور پر اعضاء کو چاہیے ہوتی ہے اس سے کم غذا ان کے اجسام میں پہنچتی ہے. اسی وجہ سے چربی جو ہے وہ کم بن پاتی ہے. البتہ اگر کسی جاندار میں چربی زیادہ ہو جائے، یہ بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی جاندار میں چربی زیادہ ہو جائے تو یہ خرابی کی علامت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں غذا کا مادہ یعنی خون چربی میں بدل گیا ہے. میں آپ کی توجہ جو ہے ان کے اس جملے پر دلانا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جاندار میں چربی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، یعنی طبعی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو یہ مرض کی علامت ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ غذا کا مادہ یعنی خون جو ہے اسی سے غذا تمام جو ہے وہ اعضاء اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. تو اگر زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو کہ غذائیت کے لیے استعمال ہونا تھا اس کا حصہ چربی میں بدل گیا ہے. تو خون کا چربی میں بدل جانا اور اس کی وجہ سے اعضاء کا سرد ہو کر موت پیدا کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر اگر ہم کام کر کے دیکھیں، جس پر ہم غور کر کے اگر دیکھیں تو ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو ڈسلیپیڈیمیا کا تصور ہے وہ اس سے کافی کچھ ملتا جلتا ہے، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ خون جو کہ غذا کے طور پر استعمال ہونا چاہیے تھا، جب چربی کا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خون ہی چربی میں بدل جاتا ہے، اور چربی کی زیادتی یعنی خون کے اندر اس چربی کی زیادتی ہو جاتی ہے. اب خون کی چربی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو چربی کا مزاج جو اطباء لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بارد اور رطب ہے، اور اس کے اندر برودت جو بھی چیز ہوگی، برودت چیزوں کو سکیڑتی ہے، حرارت چیزوں کو پھیلاتی ہے. تو چربی کا جو مزاج ہے چونکہ وہ بارد اور رطب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چربی اگر خون میں موجود ہے تو اس کے اندر لزوجت بھی ضرور پائی جائے گی. لزوجت کا مطلب یہ کہ چپچپاہٹ، اس کے اندر چکناپن زیادہ ہوگا، چپچپی ہوگی. اور جب کسی چیز کے اندر لزوجت زیادہ ہوگی، کوئی لکوڈ جو ہے جب وسکس زیادہ ہوگا تو آبویس ہے کہ اس کا دوران جو ہے وہ ویسلز کے اندر بہت کم ہو جائے گا، اور جب ویسلز کے اندر اس کا دوران کم ہوگا تو آبویس ہے کہ اس کے ذریعے سے اعضاء کو جو تغذیہ ہوتا ہے اور اعضاء کی جو ترویح ہوتی ہے، تغذیہ اور ترویح اعضاء کو جو روح فراہم ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اعضاء اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ روح، وہ حرارت غریزیہ، عضو پروسیس اور عضو کا مردہ ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے. تو ابن رشد کا یہ بیان ڈسلیپیڈیمیا کے تعلق سے بہت ہی سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے قابل ہے. سمن عفرت اور دسمت دم کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. سمن عفرت از ایکسیسیو ڈسپوزیشن آف فیٹ which leads برودت in the body. ابھی اس کا تذکرہ ہم نے کیا. It may also cause loss of movements of اعضاء. چونکہ جو چربی ہے اس کا مزاج بارد رطب ہے اور برودت چیزوں کو جو ہے سکڑتی ہے نہ کہ پھیلاتی ہے، اور حرکت کو برودت کم کرتی ہے، حرارت حرکت کو بڑھاتی ہے. تو لہٰذا اعضاء کی جو موومنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اینڈ کولڈ ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے پرسن بیکم لیزی اینڈ ڈل، obvious ہے.
उरूक़ ज़वारिबा of these individuals may lead to loss of vasodilation preventing रूह to reach आज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर है, इसको आप समझें इसको कि अतिबा ने जहाँ पर उरूक़ का तज़किरा किया है उसमें दो तरह के उरूक़ की बात की, उरूक़ ज़वारिबा, उरूक़ गैर ज़वारिबा। वरीद के लिए इन्होंने उरूक़ गैर ज़वारिबा का टर्म इस्तेमाल किया और तड़पने वाली जो वरीदें हैं यानी शरियान के लिए इन्होंने उरूक़ ज़वारिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उरूक़ ज़वारिबा का जो इनक़बाज़ और इन्क़िता है यानी उनका जो सिकुड़ना और फैलना है, यहाँ एक बात और मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ इस उरूक़ के इनक़बाज़ और इंबसात के ताल्लुक़ से। जालूलूस का ग़ालिबन बुख़ात का ये कौल है कि उरूक़ ज़वारिबा के अंदर इंबसात तो होता है, उनके अंदर इनक़बाज़ नहीं होता। तो इंबसात होता है, इनक़बाज़ नहीं होता। इनक़बाज़ इसलिए नहीं होता कि इंबसात के बाद जिसको हम इनक़बाज़ कहते हैं वो बेसिकली उसकी वो हरकत है जिससे उसने अपनी इंबसाती हालत शुरू की है। तो उसके ज़िम्ने में अगर देखा जाए तो उरूक़ ज़वारिबा जो है ऐसे अफ़राद में जिनमें कि सिमन मुफ़रित का मामला हो, जिसमें चर्बी की ज़्यादती हो, उनमें जो है इन उरूक़ ज़वारिबा का जो वासोडाइलेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, लिहाजा रूह के जो रास्ते हैं वो रुक जाते हैं और आज़ा को जो है रूह प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। तिब्बी सरमाए में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि सिमन मुफ़रित और दसूमत दम, इसका तज़किरा बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने से लेकर के हमारे मुतक़द्दिमीन से मुतअख़िरीन तक इसका तज़किरा मिलता है और किसी न किसी फ़ॉर्म में, किसी न किसी शक्ल में सभी ने इसका तज़किरा किया है। बुख़ात कहते हैं अपनी किताब फ़ुसूल बुख़ातिया में, उसमें इसके अवारिज़ात, इसके तदारुक, इसके तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर का तज़किरा करते हैं। रूफ़स की एक किताब ही है इस पर, तहज़ील समीन। तहज़ील समीन का मतलब है कि मोटे को दुबला करना। तो इस नाम से इन्होंने बाकायदा एक किताब तस्नीफ़ की है और इसमें लिखते हैं कि इन मरीज़ों में पैदाइश अमराज के इम्कानात बढ़ जाते हैं क्योंकि इनमें दम सालेह की क़िल्लत और ख़िलत बलगम की कसरत होती है। इनका कहना यह है कि सिमन मुफ़रित के मरीज़ों में मर्ज़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं दूसरे अमराज के, क्योंकि उसमें सही खून और ख़िलत की कमी होती है और ख़िलत बलगम जो है उनकी ज़्यादती होती है। इसकी वजह से रूह के जो रास्ते हैं वो तंग हो जाया करते हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी औरतों में इसक़ात हमल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये रूफ़स का अपना एक मुशाहिदा है। जालिनूस इसके बारे में तज़किरा करते हैं, इसके अवारिज़ात का तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि ऐसे अफ़राद दूसरों के बिलमुक़ाबिल जल्द फ़ौत हो जाते हैं, यानी सिमन मुफ़रित के मरीज़ जो है, जो दूसरे अफ़राद हैं उनके मुक़ाबले में जल्द मर जाते हैं। इसने मोटापे को कम करने की तदाबीर का भी ज़िक्र किया। अली बिन रब्बन तबरी अपनी तस्नीफ़ फ़िरदौसुल हिकमत में इसके असबाब, इसका हुदूस मर्ज़ का बख़ूबी अहाता किया इन्होंने कसरत ग़िज़ा और आराम पसंद ज़िंदगी को इसके अहम अवामिल में शुमार किया है। ज़करिया राज़ी ये कहते हैं कि सिमन मुफ़रित दो किस्में में तक़सीम की जा सकती है। उन्होंने सिमन मुफ़रित का बाकायदा तज़किरा किया और इन दोनों सिमन मुफ़रित का मुक़ामी और उमूमी सिमन मुफ़रित का अलग-अलग से उसका इलाज भी इन्होंने लिखा हुआ है। अपने मुआलजाती मुशाहिदात को इन्होंने इसके बारे में लिखा है और इनका मानना है कि ग़िज़ाए मुरत्तिब यानी तर ग़िज़ाएँ जो है वो सिमन मुफ़रित की अहम सबब है। अली इब्न अब्बास मजूसी कहते हैं कि इन अफ़राद की हरारत ग़रीज़िया बतदरीज कम होती जाती है, इसी वजह से ऐसे अफ़राद जल्द हलाक हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि उनके जो रूह के रास्ते हैं वो या तो तंग हो जाते हैं, मसदूद हो जाते हैं, लिहाजा उनके जो आज़ाए रईसा हैं वो आज़ाए रईसा अपना काम करना बंद कर देते हैं और वो फौत हो जाते हैं। इब्न सीना ने ऐसे मरीजों में तक़लील ग़िज़ा का मशवरा दिया है। उनका जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने कहा कि ग़िज़ा की बेतरतीबी है, ग़िज़ा की जो बेतरतीबी है, वो ग़िज़ा की बेतरतीबी जो है वो उसकी वजह से ये सिमन मुफ़रित सामने आता है और बाकायदा उसका जो इलाज लिखते हैं वो इलाज में उन्होंने मुलत्तिफ़ अद्विया की वकालत की है, यानी ऐसी दवाएं जो इस चर्बी को काट के निकाल दें, उसकी तलतीफ़ कर दें, उन दवाओं का बाकायदा इन्होंने मशवरा दिया है इस्तेमाल करने के लिए सिमन मुफ़रित के मरीजों में, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो दसूमत दम के मरीजों में। इब्न हब्ल बगदादी जो है ये कहते हैं कि सिमन मुफ़रित के मरीजों को मुरग़न ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए, यानी जो फैटी डाइट है, फैटी एंड ऑयली डाइट, उससे इन्होंने रोका है। तो ऑब्वियस है अभी डिस्लिपिडीमिया के ज़िम्न में इसका तज़किरा आया कि सैचुरेटेड फैट जो है ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डिस्लिपिडीमिया को पैदा करने का। तो इब्न हब्ल बगदादी ने ऐसी ग़िज़ाओं से मरीजों को रोका है कि उनका इस्तेमाल ना करें।
ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان مریضوں میں تقلیل غذا بتدریج کرنی چاہیے ورنہ اس کے مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غذا ایک دم سے بند کر دینی چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ، کہ اگر کل آپ جو ہے 10 گرام کھا رہے تھے تو آج اس کو جو ہے 8 گرام کریے، پھر 5 گرام کریے، پھر 4 گرام کریے، پھر 2 گرام کریے، پھر اسے بند کر دیجیے. آہستہ آہستہ تقلیل غذا کا مشورہ دیا ہے تاکہ جو ہے جسم پر اس کے مضر اثرات نہ آنے پائے. تو ٹیپرنگ کر کے جس طرح سے دواؤں میں ٹیپرنگ کی جاتی ہے بعض دواؤں کے استعمال میں، انہوں نے غذاؤں میں ٹیپرنگ کا مشورہ دیا ہے. ابن نفیس کہتے ہیں اپنی تصنیف میں کہ سمن مفرط اور قلبی، دماغی اور تنفسی امراض کے مابین گہرا تعلق ہے. یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ابن نفیس جو کہتے ہیں کہ جو مریض سمن مفرط کے شکار ہیں ان کے اندر کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹس اینڈ ریسپریٹری ڈیزیزز، ان کا پیدا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اور یہ بڑی ریلیونٹ بات ابن نفیس نے کہی ہے. داؤد انتاکی کہتے ہیں کہ جو بدن موٹے اور پتلے ہوتے ہیں ہونے میں حد اعتدال پر ہیں وہ زیادہ صحت مند ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مطلب موٹاپے نہ بہت موٹا ہونا صحیح ہے اور نہ ہی بہت دبلا ہونا صحیح ہے، بلکہ حد اعتدال پر رہنے والے بدن جو ہے زیادہ بہتر ہے. اکبر ارزانی کثرت شحم بدن انسانی کے لیے امراض کا موجب بتاتے ہیں کہ اگر شحم کی کثرت ہے جسم کے اندر تو یہ بہت سے امراض کو دعوت دیتی ہے، بہت سے امراض کا سرچشمہ ہوتی ہے. اسماعیل جرجانی لکھتے ہیں کہ مرد مذکور کے عوارضات اور علاج کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علاج بالغذا اور علاج بالدوا کے ذریعے اس کا ازالہ ممکن ہے. یعنی باقاعدہ انہوں نے غذاؤں سے اور دواؤں سے اس کا علاج بھی تذکرہ کیا ہے. تو اس تذکرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یونانی سرمایہ نے جسومت دم، سمن مفرط، لپیڈیمیا، ہائپر لپیڈیمیا، ڈس لپیڈیمیا، اس کا تذکرہ جو ہے جگہ جگہ مختلف اساتین طب نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے. تو اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو فیٹ یا لپڈ کا جو ثبوت یونانی میں بنتا ہے وہ ابن القف بہت اہم ماہر طب ہے، جس میں جو کہتا ہے کہ ان کا شمار اعضائے متشابہۃ الاجزاء میں ہوتا ہے. یعنی فیٹ یا لپڈ جو ہوتے ہیں اعضائے مفردہ میں شمار کیے جاتے ہیں. ایک اکائی ہے اعضائے مفردہ کی جس کے ذریعے سے اس نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن نفیس جسومت دم کی 2 قسمیں بتاتے ہیں، یعنی خون کے اندر دہنیت کی موجودگی یا چربی کی موجودگی کی 2 قسمیں بتاتے ہیں کہ جسومت دم ایک لطیف ہوتا ہے اور ایک جسومت دم کثیف ہوتا ہے. جسومت دم لطیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا استحالہ لحمی اعضاء کی تغذیہ اور حرارت طبیعیہ کی پیدائش میں ہوتا ہے. بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو لحمی اعضاء ہیں ان لحمی اعضاء کے استحالے میں استحالے کے وقت اور اس کی تغذیہ کے وقت اور حرارت طبیعیہ یا حرارت غریزیہ کی جو پیدائش ہے اس کے لیے اس کا لطیف جسومت دم کا استعمال ہوتا ہے. اور جسومت دم جو کثیف حصہ ہے اس کا وہ اغشیہ اعضائے باردہ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں یہ برودت کے سبب جم کر شحم کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے. تو یہ لطیف اور کثیف 2 طرح کی جسومت دم کے قائل ہے. اور لطیف جسومت دم اگر دیکھیں تو وہ بلڈ کے اندر موجود رہ کر کے مختلف لحمی اعضاء کا تغذیہ کرتا ہے اور اس میں جو حرارت غریزیہ ہوتی ہے ان حرارت غریزیہ کے لیے کمک ثابت ہوتا ہے. اور جو کثیف حصہ اس کا ہے جسومت دم کا وہ حصہ وہی حصہ ہے جو ٹشوز اور سیلس میں جا کر کے جو چربی جمع ہو جاتی ہے اسی کو یہ جسومت دم کثیف سے تعبیر کرتے ہیں. تو لطافت اور کثافت 2 طرح کی شحمیت کا تذکرہ کرتے ہیں. ابن نفیس مزید لکھتے ہیں کہ شحم کی دہنیت و لزوجت، یعنی اس کے اندر جو چکنا پن ہے اور اس کے اندر جو اس کا جو وسکوسٹی ہے وہ حرارت کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھتی ہے، یعنی حرارت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے. تو کنزرویشن آف ہیٹ جو ہے اس کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے. یہ جسم کو حرارت و برودت سے محفوظ رکھتے ہیں، بہت زیادہ برودت سے بھی یہ جسم کو بچاتی ہے، بہت زیادہ حرارت سے بھی بچاتی ہے. اپنی دہنیت کے سبب بعض اعضاء کو ضرب سے بچاتی ہے، جہاں جہاں یہ موجود ہوتی ہے تو اپنی چکناہٹ کی وجہ سے اعضاء کے اندر رگڑ اور فرکشن سے روکتی ہے جس کی وجہ سے اعضاء جو ہے وہ ضرب و سقطہ سے بچے رہتے ہیں. شحم کی تو اقسام اگر دیکھی جائے ان اطباء کے بیانات سے تو علی بن عباس مجوسی کہتے ہیں کہ شحم 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 قسموں کی شحم کا تذکرہ کرتے ہیں، سمین اور بدک. یہ کہتے ہیں کہ سمین یہ شحم کی پتلی قسم ہے جو عضلات کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور بدک کو یہ کہتے ہیں نسبتاً موٹی شحم ہے جو عضلات کے درمیان پائی جاتی ہے. تو یہ سمین اور بدک میں موٹی اور پتلی شحم کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 قسمیں بتاتے ہیں. ابن سینا لکھتے ہیں کہ سمین اور رواج شحم کی 2 قسمیں ہیں. تو سمین شحم کا وہ حصہ ہے جو طبعی درجہ حرارت پر مائی شکل میں موجود ہوتا ہے، لکوڈ فارم میں ہوتا ہے،
اور रवाज ये कहते हैं कि ये जिस्मानी दर्जे हरारत पर जामिद शक्ल में आज़ा पर जमा होता है। तो समीन जो है ये मई चर्बी को कह रहे हैं, मई शहम को कह रहे हैं, और रवाज जो है ये जामिद शहम को कह रहे हैं। इब्नुल कफ के मुताबिक समीन अजलात पर मौजूद शहम होती है, और सर्ब जो है अजलात के अलावा जहां भी शहम मौजूद है उसको ये सर्ब के नाम से बता रहे हैं। मजूसी कहते हैं कि सर्ब वो झिल्ली है जिस पर शहम मौजूद होती है। थोड़ा सा इब्नुल कफ से अलग बात इन्होंने कही कि सर्ब एक झिल्ली है जिस पर शहम मौजूद होती है, जो इनकी अपनी सोच है, इब्नुल कफ की अपनी सोच है। और वदक जिस शहम से बदन का तग़िया होता है उसे वदक कहते हैं। इब्न नफीस का मानना है कि समीन और शहम दो तरह की चर्बी बदन में पाई जाती है। समीन बदन में माई शक्ल में मौजूद होती है, और जो जामिद शक्ल की चर्बी होती है उसको शहम कहते हैं। तो इनकी अक़साम में आप देखें तो अक़साम में हमें मिलता है कि चर्बी जो है बेसिकली दो तरह की होती है, एक पतली चर्बी, एक मोटी चर्बी। पतली चर्बी उस चर्बी को ये कह रहे हैं जो दुस्मत दम है, यानी जो खून के साथ मिली हुई चर्बी, उसको समीन कह रहे हैं। और जो आज़ा में जाकर जमा हो जाती है, डिपोज टिश्यूज में जो जमा हो जाती है, उस जमा शुदा को ये जमी हुई, या उसको शहम के नाम से या रवाज के नाम से अतिब्बा उससे उसका ये नाम देते हैं। अब मज़कूरा बयान के साथ साथ अगर हम ये गौर करें कि नज़रिया अखलाक का शहम से क्या ताल्लुक़ है, तो देखें कि तमाम अतिब्बा ने शहम का जो मिजाज लिखा है, ज़्यादातर अतिब्बा ने, कुछ लोगों का इस पर अख्तलाफ भी है। शेख जैसे इसके मिजाज को सिर्फ रतब लिखता है, इसमें शेख उसको हार कहता है, बारिद नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर अतिब्बा का इसका मिजाज बारिद रतब लिखते हैं, और इसका शुमार जो है खिलते बलगम में करते हैं। आप याद करें, एक रिकॉल करें कि जब आपने जहाँ भी उमूर तबीया में खिलते बलगम का तस्करा पढ़ा है, तो खिलते बलगम किन किन चीज़ों को खिलते बलगम में शुमार किया जाए, उसमें अमराज बलगमिया के नाम से एक फहरिस्त होती है कि वो तमाम अमराज जो खिलते बलगम से मुताल्लिक होते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि अतिब्बा ने किन किन चीज़ों को बलगम में शुमार किया है। तो अगर हम अमराज बलगमिया की फहरिस्त का मुताला करें तो हम देखेंगे कि वहाँ एक सिलाए शहमिया का तस्करा आता है। सिलाए शहमिया यानी ऐसी मलफूफ थैली जिसके अंदर शहम मौजूद होती है, उसको भी अतिब्बा ने अमराज बलगमिया में शुमार किया, यानी शहम को बलगम से ताबीर किया है। तो शहम का मिजाज भी बारिद रतब, बलगम का मिजाज भी बारिद रतब, और शहम को बाकायदा अतिब्बा ने खिलते बलगम में शुमार किया है। यही वजह है कि जिस्म के बारिद आज़ा के बारिद हिस्सों में जमा हो जाती है। ये नज़रिया अखलाक को अगर हम सामने रखें तो हम ये ज़ाहिर कह सकते हैं कि शहम जो है खिलते बलगम की ही में ही इसका शुमार होना चाहिए। ये इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि फैट को बेसिकली अगर देखा जाए तो हम तीन तरह से देख सकते हैं, दुसूमत दम, शहम और समीन। तो दुसूमत दम का चूंकि अतिब्बा ने इसका तस्करा किया है कि खून में मौजूद रहते हुए आज़ा का तग़ज़िया करती है, और कुछ हिस्सा इस दुसूमत दम का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो आज़ा में जाकर जमा हो जाती है, तो उसको शहम और समीन किससे ताबीर करें, शहम जो उस जमी हुई चर्बी को, समीन उस पतली चर्बी को। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन। अब इसके असबाब का अगर हम मुताला करते हैं, यूनानी जो लिटरेचर में असबाब क्योंकि बार बार उसका जिक्र हो चुका है, तो डाइटरी फैक्टर्स में लेकिन जल्दी से हम देख लें इसको कि वो तमाम असबाब, वो तमाम ग़िज़ाएँ जो कि मरतूब और मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल, ख़ासतौर से उन अग़ज़िया का इस्तेमाल जो सैचुरेटेड फैट है उनका इस्तेमाल। बिहेवियरल फैक्टर्स में अगर देखें तो रब्बन तबरी ने बड़ा अहम बात ये कही है कि राहत व फ़रहत, यानी प्लेजेंट लाइफ, अननेसेसरी रेस्ट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इसी तरह से सरवत व ग़िना, लग्ज़ूरियस लाइफ स्टाइल, प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन हमाम, इसका तस्करा किया कि इन सबके मौजूदगी की वजह से भी समन मुफरिद जो है वो ज़्यादा होती है, और जिसमें दुसूमत दम और शहम व समीन का इजाफा होता है। अगर इसके इंटरनल कॉजेज़ में हम जाएँ तो ऑब्वियस है कि मिजाज बलगमी जो है, चूँकि इसका मिजाज बलगम का मिजाज है, तो मिजाज बलगमी के लोगों में इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए। और दूसरा जो इंटरनल कॉज सकता है उससे मिजाज कबिद, कबिद का जो मिजाज है उसमें सुई मिजाज लाहिक हो जाए, स्पेशली सुई मिजाज कबिद बारिद, उसमें बरूदत पैदा हो जाए, तो कबिद का जो काम है वो कबिद अपना काम प्रॉपर्ली ना कर पाए। अगर एक लिस्ट देखी जाए इसकी, तो लिस्ट में देखें तो मौरूसी एंड खिलकी यानी हेरिडिटरी एंड कंजेनिटल हो सकता है ये, और इसका तस्करा डिस्लिपिडीमिया में भी मौजूद है, या तिब्बा ने कहा है इसको। मरतूब गैर फैटी डाइट, इसका भी तस्करा डिस्लिपिडीमिया में मौजूद है। बरूदत मिजाज, ये तिब्बा का कौल है।
राहत में लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी डिस्लिपिडीमिया के उसमें एसोसिएटेड कंडीशन है। कसरत ग़िज़ा, ये भी डिस्लिपिडीमिया का एसोसिएटेड कंडीशन है। शरबत व ग़िना रिचनेस, ये भी एसोसिएटेड कंडीशंस है। फरहत यानी एक्सेस जॉय जो है, ये भी इंसान को जो है इस हालत में ले जाता है कि वो उसके अंदर जो है हरकत की कमी आ जाती है। अतिबा ने सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट बेडिंग का भी तस्करा किया है कि ये भी जो है फैट के जमा होने का सबब है। इसी तरह से अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, स्पेशली आफ्टर मील, ये भी डिस्लिपिडीमिया के जो है वारदात में शामिल के रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। अब मैं अपने आखिरी स्लाइड पे आता हूँ और उस बहस पर आता हूँ जिसके लिए ये तमाम बहस की गई है, डिस्लिपिडीमिया का तस्करा, समन मुफरित और रसूमत दम का तस्करा। अब इन दोनों अमराज का जो तस्करा है, जिस तरह से अतिबा ने इसका तस्करा किया, जिस तरह से तिब्ब मगरिब ने इसका अहाता किया है, इन दोनों को अगर सामने रखा जाए तो जो चीज़ें इसकी कॉमन है, जो कंट्राडिक्टरी है, उनको सामने रखते हुए अगर हम डिस्लिपिडीमिया की पैथोफिजियोलॉजी समन मुफरित और रसूमत दम की रोशनी में तय करना चाहें तो बहुत आसान है। हम देखें कि जो अखलात अरबा की जो पैदाइश है वो कैसे होती है। वो अखलात अरबा हुजूम अरबा के जरिए से पैदा होते हैं। हज़्म मेदी व मेवी, हज़्म कबदी, हज़्म उरूक़ी, हज़्म उज़वी, ये हुजूम अरबा के नतीजे में अखलात अरबा जो है वजूद में आते हैं। और अखलात अरबा कुछ और नहीं है, ये वही मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो ग़िज़ा खाने के बाद से लेकर के उनमें जो तब्दीलियाँ होती हैं, उन तब्दीलियों से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की शक्ल में, जो आज़ा के लिए बदले में तहल्लुल फराहम करते हैं, वही हुजूम अरबा के ज़रिए से हासिल होते हैं और आज़ा इनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो लिपिड या शहम जो है वो उन्हीं अखलात अरबा का एक हिस्सा है। और चूँकि खिलते बलगम से उसका ताल्लुक अतिबा जोड़ते हैं, लिहाजा इसको जो है खिलते बलगम से मुताल्लिक़ समझ करके उसको देखा जाए और समझा जाए कि खिलते बलगम के ताल्लुक से जो इसकी पैदाइश है वो कहाँ से हो रही है, किस तरह से हज़्म मेदी और मेवी, हज़्म कबदी, हज़्म उरूक़ी और हज़्म उज़वी के ज़रिए से क्या इसका रोल होता है, उसको ध्यान किया जाए, उसको ध्यान में लाया जाए। तो देखते हैं उसको हम कि जिस तरह का खाना हमने खाया, जो कंज्यूम किया है हुजूम अरबा में, उसी तरह के अखलाक हुजूम अरबा के ज़रिए से पैदा होते हैं। अगर इस नॉर्मल फिजियोलॉजी में हज़्म कबदी अगर अपना काम प्रॉपर ना कर पाए, अगर उसमें कोई फसाद लाहिक हो जाए, हज़्म उज़वी में कोई फसाद लाहिक हो जाए, तो ऑब्वियस है कि जो एलडीएल के रिसेप्टर्स हैं, वो सेल्स, जो डिस्लिपिडीमिया का जो कंसेप्ट है, वो जो पेरिफेरल सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं और उसके नतीजे में जो एलडीएल है, जो कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को जो लीवर से पेरिफेरल सेल्स में ले जाती है, वो उसके साथ अटैच नहीं कर पाती, लिहाजा एलडीएल जो है, बढ़ा हुआ एलडीएल, वो दौरान खून में सामने आता है। तो फसाद हज़्म कबदी और फसाद हज़्म उज़वी, इसको सामने रखते हुए इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अगर तय किया जाए तो हमें मालूम होगा कि इसके फसाद के नतीजे में जो चर्बी तैयार होती है, वो उसका मिजाज जो बारिद रतब होता है मादा, और उसकी वजह से उस बरूदत और रतूबत की वजह से क्या होता है कि जो वेसल्स में, उरूक में जो उनके इंबसात की जो कैफियत है, इंबसात की जो हालत है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती। जिन उरूक के अंदर इसकी ज़्यादती होगी, उनके अंदर वासोडायलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इसके साथ-साथ चूँकि जो शहमियात हैं, जिनका प्रोडक्शन फसाद हज़्म कबदी, फसाद हज़्म उज़वी के नतीजे में जो शहमियात सामने आ रहे हैं, उनका जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, लज़ूजत उसके अंदर शामिल है, उनके अंदर चिकनाइयत शामिल है। तो एक तो लॉस ऑफ वासोडायलेशन और दूसरा जो मादा है, वो मादा खुद लज़िज है। तो ये लज़िज मादा और वासोडायलेशन की कमी, ये दोनों ही चीज़ें डबल फोल्ड काम करती हैं कि जो उरूक है, उन उरूक के अंदर उनकी जो गुंजाइश है, उनकी गुंजाइश कम हो जाती है, उन उरूक के अंदर तंगी हो जाती है और उन उरूक के ज़रिए से जो रूह है, वो रूह आज़ा तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाती है। लिहाजा अदम तरबीह आज़ा की वजह से कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स और मुख्तलिफ नेक्रोसिस की जो फॉर्म्स हैं, वो सामने आती हैं और उसकी वजह से आज़ा जो है मुर्दा हो सकते हैं। ये उसका एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से कसरत ग़िज़ा, सूए हज़्म और बुरुत मिज़ाज कबिद, राहत, फ़रहत, सरवत, ये असबाब के तौर पर काम करते हैं और उसकी वजह से
ہضم کبدی جو ہے، سوء مزاج کبد کی وجہ سے ہضم کبدی متاثر ہوتی ہے، میٹابولزم آف لیور متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے قائم کم جو ہے ڈائجیشن وہ پراپر نہیں ہوتا، لہٰذا خلط بلغم جو ہے فلیگمیٹک ہیومر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بلڈ میں پیدا ہوتی ہے، اور وہی جو ہے رسومات دم پیدا کر کے ڈسلیپیڈیمیا کے جو اثرات ہیں اس کو سامنے لا سکتی ہے۔ تو یہ میرا جو ہے سبمیشن تھا، اور یہ میری ایک رائے ہے کہ اس سلسلے میں ایسا ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر سے تمام آرگنائزرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، اور تمام شرکاء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میں جو سجیشنز ہیں، جو آپ کے مشورے ہیں، وہ مجھ تک آپ ضرور پہنچائیں تاکہ اس کو میں مزید اور اس کو اپڈیٹ کر سکوں، اور اس میں آگے کی جو راہیں ہیں، آگے کی جو جہتیں ہیں وہ کھل جائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطا اللہ صاحب۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے فتح تبسم اور اس کی طبی ماہیت کے حوالے سے ایک انتہائی پرمغز اور معلومات افزا گفتگو سماعت فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ عطا اللہ صاحب کی گفتگو نہ صرف فتح تبسم بلکہ دیگر متعدد امراض کی ماہیت کو سمجھنے میں بھی بہتر کردار ادا کرے گی۔ موصوف نے لکوڈ، اس کے اقسام، پیداوار کا طریقہ، نقل و حمل اور اس کے معیار اور مقدار میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے پیچیدگیوں کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے کہ اطباء نے فتح تبسم اس کی پیچیدگیوں کے تصور کو ضمن مفرد اور رسومات دم کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔ یونانی معالجین نے بتایا ہے کہ کثرت غذا، تیل والے کھانے اور آرام طلب طرز زندگی اور دوسری شہم کی کیفیت و کمیت کو تبدیل کرنے کی کلید، جس کے نتیجے میں اعضاء کے لیے روح کی دستیابی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور نتیجتاً دل اور دماغ اور دوسرے اعضاء کاری نفس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فتح تبسم کا طبی یونانی کی روشنی میں ضمن مفرد اور رسومات دم کے تحت اصول علاج مرتب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرض کا علاج درست تشخیص کے بنا ممکن نہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ طب کی بنیادی تشخیصی ذرائع 3 ہیں، جنہیں نبض، بول اور براز کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان بنیادی وسائل کے علاوہ جلد کی رنگت، ملمس، منافذ، نوم و یقظہ، احتباس و استفراغ کی حالت اور دیگر اور بھی علامتیں ہیں جن کی انگلی تھام کر مرض کی تشخیص کے مرحلے کو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہی ذرائع میں ایک ذریعہ تعریف بھی ہے جو ہمارے لیے اہم تشخیصی ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اسی اہم عنوان پر اظہار خیال کے لیے آج کے دوسرے مقرر ڈاکٹر عزیز الرحمان کو زحمت سخن دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب طب کے ایک جواں سال محرک اور فعال اسکالر ہیں جو گزشتہ 6 سالوں سے طبی تدریس سے جڑے ہیں۔ فی الوقت آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے شعبہ ماہیت الامراض میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کے زیر نگرانی ماہیت الامراض میں ریسرچز کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ عزیز، آپ کی تصنیفی و تالیفی سرگرمیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ معتدل رسائل میں اب تک آپ کے تقریباً 50 مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ نیز آپ کے نام سے طب کی ایک اہم ترین کتاب تحقیق کے بنیادی مراحل بھی منسوب ہے۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پیشکش کا آغاز کریں، اور میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیکچر کے دوران ہی فیڈ بیک فارم شیئر کیا جائے گا، آپ برائے کرم اس کو بھرنے کی زحمت کریں۔ تو ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، آپ اپنا لیکچر۔ Hello, voice is clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ہاں Okay, جی thank جی you. Thank you, Dr. Sadiq sir. Assalamu alaikum to all of you and very good morning. I'm very much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who has given me opportunity to present my talk over here.
After that, I'm very much thankful to organizing chairperson of this webinar, Professor Abdul Wadud sir, Director NIM Bengaluru, and then organizing secretary, HOD Department of Mahiyatul Amraz, Professor Abid Ali Ansari sir, and all committee members, moderator, my seniors, juniors, my teachers. Today, I'm going to present a talk on diagnostic values of sweating in Unani medicine. Actually, diagnosis is very most important aspect of any system of medicine, any pathy, because without diagnosis, you can't treat the disease properly. If you are unable to diagnose the disease, actually you will not treat the disease, and you will not treat the cause of disease, and you will not treat the any anomalies. So I have taken this topic, diagnostic values of sweating, because this sweating or this topic of sweating or its diagnostic values most of the time are untouched. But our Unani scholars, it is duty of Unani scholars to explore or comprehend and generalize these topics who are discussed 1,000 years back, and they have given a valuable argument about all the diagnostic characteristics or features of sweating. So we should know about the sweating and its related things for better diagnosis and for better treatment for the mankind. So I'm going to start my talk. First of all, we'll see the contents of this talk. Introduction, significance of sweating, introduction, what is the sweating and what are the skin features, etc. Significance of sweating, figure, what I have developed, tables, characteristics of sweating, effects of sweating on body, it is very important, conclusion, and from where I have taken the literatures to present my talk. First of all, we will start with a very common thing. As we know, the skin is the largest organ of the body. It does not have equal thickness over the body. It is not a, we can say it is not a modern definition. The second line of this first paragraph, it does not have equal thickness over the body, already discussed by Ibn al-Qif, Umda fil Jarahat, volume 1. After that, average thickness of skin is about 1 to 2 millimeter. We can say the average thickness. And we know 2 layers, epidermis and dermis. I'm not going in detail, we all know. Then we will see the sweating is a physiological phenomena to eliminate the waste as well as excess matter from the body. It is not a new, we can say the definition is already discussed
in Zakhira Khwarazm Shahi and Ismail Abu Sahil Masihi, Ibn Sina, and before Ibn Sina, Zakaria Razi, they all have discussed the sweating is a physiological phenomena, means it is governed by tabiyat to eliminate the waste, to save the body from excess matter. Importance of sweating was discussed thousands of years back in Greek Arab system of medicine under the heading of Tariq or Arq, whatever. We should take the theme from this paragraph. Okay, nothing topic, no topic is there they have not discussed. In United System of Medicine, abundant literature is available regarding sweating and its significance. In continuation, regime and diaphoretic drugs used to induce therapeutic sweating are clearly described in Unani literatures. Regimental therapy persons or doctors or physicians are very much known about this regime and diaphoretic drugs. That's why I've taken this topic. We can discuss all the points and all the features of this sweating. And then actually physis of body works continuously to manage everything. As we know, a tabiyat, physis or physis, the supreme planner of the body. It governs everything, what we should take, what we should release, what we should eliminate, what tabiyat wants to take more amount and what tabiyat wants to take in less amount, and what we have to do after running, what we have to do at the rest, what we have to do during sleep, what we have to do during eating and drinking, and etc., etc. All the things are managed by tabiyat. That concept has been given by Unani physicians in early centuries. Ancient Greek Arab scholars explained that the sweating occurs for cleansing of blood or to reduce the workload of other excretory organs. It is a very, very, very important theme they have given, concept they have given, they have proposed. Now it is very much clear, like you can see a sun or moon. It is very much clear. And nowadays it is going to be a fashion to walk in early morning, to run in early morning. Even though the person doesn't know how to play, they will go and play football. They doesn't know how to play with the hand or leg. Just I am saying that just for sweating, because his or her physician told, go and avail the characteristics of sweating, and then cleansing of blood or to reduce the workload of other excretory organs. It is very much clear. They also describe the importance of sweating as a regime in different diseases. They have discussed different diseases. The Unani physician will describe regimental therapy. Physicians are very much known, some skin diseases, some other diseases, to reduce the workload on kidney, etc. This is slide attributes of sweating. What is the attributes of sweating? First of all, sweating is nothing but it is governed by tabiyat to release the workload of kidneys. Suppose the person has taken excessive fluid or water, or maybe the kidney will be diseased, or the kidney will be unable to filtrate whatever should be filter properly, and improper filtration we have discussed, and sometimes use diuretics. At that time, which is very much important thing, at that time when we are using diuretics, adjustment of sweating rate
That is very important thing, which is governed by tabiat through sweating. Next, we take sweating as a signs and symptoms. A lot of diseases we can take as a sign and symptoms according to sweating, according to characteristics of sweating. We can see, or we can elaborate, or we can explain to find out the signs and symptoms. The next point is attributes of sweating is excretion of waste. Is very much clear, and it is also discussed or explained by modern science also. One researchers I have read, they told at the time of research, they found that some waste material or some substances are present in the sweat. Those are normally not present in the blood. They must not present in the blood. So if it is present in the blood, tabiat excrete these waste to save the health. The next point is cooling of body. It's very much clear. Temperature maintenance. It is a physics law. If there is evaporation, during evaporation, any liquid takes heat or temperature to evaporate. The next point is minimize the chance of accumulation of vicious matter. This is very much important. That's why I have taken this point in red color. If there is no excretion of waste via sweating, whatever tabiat wants to excrete out through sweating, that waste material will accumulate in the body and causes various diseases, as we have seen the lecture of Ataullah Fahad sir, dyslipidemia, hyperlipidemia, all these things. Anything will accumulate in the body which should be excreted out will cause disease. The next point is therapeutic role. We have discussed. It is very much clear, and we know sweat is formed by special glands known as Sweat is formed by special glands known as sweat glands. There are two types of sweat glands, eccrine, apocrine, and its distributions. Ismail Jurjani stated that sweating is the effect of tabiat. I think we have discussed. This is governed by tabiat. How, why the tabiat wants to excrete? It does. It is a waste of Hazm Salis, third digestion. Here, I think there are different opinions. Ismail Jurjani stated that third digestion, and I think some other Unani physicians discussed third and fourth. Hazm Salis is the waste of third and fourth digestion, which takes place in the vessels of the body. When it is retained, it causes abnormality like disturbance of innate heat. It is very important point. They have discussed, they have explained. Extra amount of waste material, if it retains in the body, it will minimize the innate heat. It will reduce the innate heat. It will disturb the innate heat. If innate heat will be less, no function will be there, or the function will be hampered. Tabiat wants to excrete out the waste of body through sweating. We have discussed earlier.
Okay, next slide. Unani description of sweating as a waste matter is accounted by contemporary research, which says that some waste matter like urea, etc., appear in sweat. In small vessels of the body, nutrition cannot circulate without fluid or water and yellow bile. It means they were very much known about how sweat forms. And after providing the nutrition to the target organ, watery substance returns back through vessels towards the kidney for urine formation. But a small amount of water remains in the organ and excretes out through the skin with or without waste in the form of sweat. They have differentiated, Unani physicians in 1000 years back, they have differentiated the excretion or sweat is having waste or not. Suppose there is a less amount of water in the organ due to weak retentive or absorptive power of organ, water will not be retained in the organ. Eventually, water soluble waste, obviously these are present in the body, water soluble waste substances will not excrete out properly through sweat. That may lead to overloading or accumulation of that particular waste material and causes anomalies there, maybe in the body or in the organ, specific organ, or overall body, or the body. If sweat does not have waste, it evaporates from skin insensible. How they were known about these type of phenomenon. Suppose sweat does not have any waste, the skin will not sense that sweating. Ismail Jurjani, the author of Zakhira Khwarazm, as we know, when it contains waste, then the person feels sweating. Here, this is my opinion. I think it depends on density and solutes of the sweat. If density or solutes of the sweat will be less, the person will not sense the sweating is going on. If there is a density or solutes of the sweat will be more, the person will feel because of density. So here different characteristics of sweating indicate the condition of humors, digestion, and waste in the body. It also indicates the type of humor which is increasing in the body, because anything which is increasing in the body, tabiat wants to eliminate that excess amount of particular health or humor, and is very much related, formation of halat is very much related to digestion. So we can point out the digestion is okay or not. Normal sweating may be due to hot weather, exercise, steam bath, and bohrani jayyid. Unani physicians described the causes of abnormal sweating as excessive exercise, weak retention power of body, means the quwwat-e-dafiya becomes weak and it will be unable to retention of power of retention, means quwwat-e-jaziba or masika becomes weak. Imtilai mawad, accumulation of matters, severity of disease, or few wasting diseases. Now we will see significance of sweating. It is proposed that sweating accelerates the elimination of contaminants from the body, from human body, to maintain homeostasis. It is very specific significance, very smart significance, and very valuable thing of sweating, to eliminate contaminants from the body. It is a way to cool the body and prevents overheating. In a series of studies, it is found that the concentration of the chemicals in sweat were often higher than that of blood, and some investigations, chemicals were known
उसके बाद बेबी नॉर्मल ग्रो करना गालिबन डॉक्टर अजीज साहब डिस्कनेक्ट हो गए। अभी म्यूट हो गया। हेलो, हाँ ओके ओके हाँ, ओके ठीक है, आवाज आ रही है। ओके ओके दोबारा कर। Okay, sorry for interference. Now voice is clear? Yeah. Clear? Okay, Yes, okay. yes. Okay, sorry. So the hypothesis was formulated that these particular chemicals are possibly excreted in sweat to reduce the body burden. As we have discussed all the things, all the points, many physicians, they have discussed earlier. Just we will go to next slide. Following characteristics of sweating guide the physician towards the condition of body like quantity, color, taste and odor, consistency, temperature of sweat matter, timing and regularity of sweating. I think slide is not movable. Everything they have Not moving. discussed. Slide is not moving. Nothing they have left. Quantity increase or decrease. In case of increasing, excess of water just matter in the body and over opening of the skin, not movable. Wait. Yeah, it's now moving. Slide number 14 is on screen. Sorry for the technical issue. Please hold on.
Yeah, it's moving now. Okay. Okay, sorry for interference. Now moving? Yeah. Okay. The cause of increase sweating, excess of water or viscous matter in the body, and over opening of skin pores, and decrease to decrease the for decreasing of sweating, there is a few causes. Less fluid in body, unduly viscid matter clogs the pores. Unduly viscid matter will clog the pores. Partial opening of skin pores, weakness of power of elimination, etc. The color of sweat, dominance of type of humor, it indicates the which humor is dominating. Condition of physis of body also. Taste and odor, its significance is it shows the presence and elimination of feces matter in the sweat. Consistency indicates the duration of diseases. Suppose if there is a viscid consistency of sweat is viscid, it means it shows the duration of disease will be more. Next point is temperature of sweat matter, duration of disease, and condition of innate heat. It shows temperature of sweat matter shows the duration of disease in terms of weakness of innate heat or condition of innate heat. Suppose innate heat is weak, the disease will be for longer duration. Timing and regularity of sweating, condition of physis, it shows the condition of physis and eliminating power. Now, the quantity of sweat depends upon the following factors: quantity of fluid in the body, consistency of fluid content, condition of skin pores, power of elimination, weak or strong, power of retention of the body, weak or strong, digestion and transformation. Quantity of fluid in the body is very much clear. If more amount, more sweating. Consistency of fluid content, if in the body the viscid the matter which is going to be excreted out will be viscid or thick in consistency, then the quantity of sweat will be less. Condition of skin pores, open or close or partial open, power of elimination, what the condition of Quwwat-e Dafiya, it is properly working or not, power of retention of the body, and digestion and transformation. If digestion and transformation is good, the quantity will be normal. More sweating without any sign of disease indicates more water. Content in the body and surplus opening of skin pores. In other conditions, excess perspiration denotes the presence of more waste in the body. This excess sweating is beneficial for body. It depends on the workload of the body. If workload is less, no need to more sweating. If workload of excess matter or waste matter will be more, then it will sweat. Correction of accumulation of waste material in the body is done with the help of power of elimination by tabiyat. But if power of retention becomes weak, excessive perspiration will be without the sign of accumulation of excess waste matter in the body. Suppose Quwwat-e Dafiya is weak, and there is excessive perspiration, and there is no sign of accumulation of waste matter in the body, it denotes that the condition of body is not good. That means tabiyat is unable to retain the useful substances also. There is no sign of accumulation, but excessive perspiration is there. It means that tabiyat is weak to retain the fruitful, useful substance in the body. In disease condition, more sweating means there is more accumulation of viscous matter in the body. Very important thing.
the disease condition or disease matter is more, then sweating will be more, because if there is a more disease matter, the tabiat wants to excrete more and more to regain the healthy condition. Majusi said that the excessive sweating leads to weakness. Is a very important thing, because every elimination utilizes the energy. Even it is useful or not useful, it will utilizes the energy or hararate garizia. As well as excess use of hararate garizia, the tabiat will feel weakness. If sweating occurs in bilious fever, especially on head, neck, and chest, sign of bad prognosis. It means the disease is going to be in bad condition, a fatal condition. It denotes the weakness of quwwat haywania, vital power, especially when the sweating is cold, because vital power provides hararat, heat to the body and excreted matter. It also indicates the excess of vicious matter in the body, and tabiat is unable to eliminate it. Unani physicians mentioned causes of decrease in sweating too, like less fluid content in body, unduly viscid matter, and raw matter, partial opening of skin pores, and weakness of power of elimination. We'll discuss about color of the sweat. Color of sweat is used as a parameter to point out the dominance of particular filth in the body as well as condition of physis. Suppose there is a dominancy of filth safra, the color of perspiration or sweat will be yellowish in color, and normally the color of sweat is whitish. Some other colors are reddish, like reddish due to fasade khilte dam or dominance of khilte dam. Yellowish in color indicates dominance of khilte safra, we have discussed. Greenish or grayish color indicates the dominance of khilte sauda. Colorless sweat is due to dominance of balgam or weak retentive power of capillaries. The capillaries must retain that watery substance or much more fluid. If it will be unable to retain, that particular fluid will mix with sweat and give color, and there is no color. Body eliminates surplus quantity of humus through skin to save the body from side effects of excess or accumulated humus, discussed already. But if these colors of sweat are present without dominance of filth, then it indicates elimination of the useful humus. Taste and odor. Sometimes taste and odor of sweat are useful in the diagnosis of disease. You will experience, if you take some specific type of food or spices, you will feel, you will sense, you will smell the sweat like what you have taken earlier. Like, just you will take one example, fenugreek, hulba methi. If you will take hulba or fenugreek orally, then after digestion, or you will smell the fenugreek in your body, which is present in the sweat matter. So these minute or minor things they have experienced. And very much important point, the smell of sweat depends upon the time and occasion also. Suppose you are running, the smell of waste will be different, and you are in a standing position and you are sweating, the smell of sweat will be different. You will experience. Suppose if you are a player, you will play, you will run, you will walk, then you will experience these type of things. Foul smell of sweat denotes the presence and elimination of viscous matter in sweat, turns into in pungent smell. The bitterness of sweat is due to the dominance of khilte safra. It's clear. Consistency. Unani physicians have proposed two types of sweat consistency in disease conditions. One is thin and second is
thick. Thin sweat indicates the dominance of thin humor like saffra, and thick consistency of sweat shows the dominance of viscid matter like soda. Here we will see, we will think Nush slows down in Gali's Khild. It indicates suppose dominancy of viscid matter, the duration of disease will be more because tabiyat wants to concoct or wants to give nush in that matter. It depends upon consistency of that matter. If Gali's Khilt is dominant, it will take more time to give nush. That is why balgam and soda take more time for concoction. If you are going to see the when we are giving a munjij balgam and munjij soda, it also indicates the prolongation of disease because physis takes more time to correct or eliminate such type of matter. It also indicates the prolongation of disease because physis takes more time to correct or eliminate the temperature of sweat matter. Normal temperature of sweat, same as body temperature, is a good indication. Means body does not feel it. If same as of body temperature, body will not feel. But cold sweat as well as hot sweat are not a good sign. We will see the tuberculosis or the patient feels cold sweating. It is not a new term. They've already discussed about cold sweating, and they told this is not a good sign. In any condition, especially in high-grade fever, if cold sweating occurs, it points out Hararate Garisia is peak, or vicious matter is excessively present in the body, because the tabiyat will be unable to cope up that vicious matter to eliminate properly or to concoct properly for elimination. And tabiyat becomes unable to manage this situation. Continuation, and in an innate heat is unable to make essential alteration which is required by tabiyat in terms of temperature, consistency, and quantity of sweat or causative matter. That's we have discussed. Tabiyat will be unable to maintain that temperature, consistency of sweat, and quantity of sweat. Cold sweat highlights one more important aspect to the physician, that is the prolongation of disease. Unani described hot sweat is better in any condition as compared to cold. Why? Because there is a hot sweat, it means there is a optimum level of Hararate Garisia in the body, and it is a very much good sign for the body. Now, timing and regularity of sweating. Under this heading, Unani physicians have discussed importance of timing and regularity of sweating. Uniform sweating at regular interval shows a better state of tabiyat and proper elimination of matter. Uniform sweating and regular interval, when the sweating is needed, there is sweating. There must be sweating. If there is no need of sweating, must not be sweat. It means the better state of tabiyat and proper elimination of matter. If regular interval, at the regular interval there is a sweating, then there will be proper elimination of that vicious matter or excessive matter which is going to accumulate in the body. Irregular sweating, not uniformly distributed over the body, indicates weakness and inability of tabiyat to eliminate the vicious matter. Regular interval means that the tabiyat is working properly. We have discussed proper elimination. That means matter is having equal consistency, because if suppose
some matter is viscid, viscous matter is viscid, and some are thin, then what will happen? The concoction of thin matter will be earlier, and tabiat will eliminate earlier through sweating, and thick matter will be eliminated later. All these phenomena will alter the interval of sweating as well as elimination of matter. That we can say the irregular sweating. It shows the weakness of quwwat idafiyya of that particular area of skin or overall body. Effect of sweating on body. Unani scholars describe the effect of excessive and decreased sweating under the heading of istifrag gair zaruriya, abnormal elimination, and abnormal retention. Ibn Sina wrote in Al-Qanun fi Tibb that if elimination and retention of matter from body are balanced, in balanced amount, balanced in consistency, proper time, regular interval, and occur when needed, it is very important, when needed, are beneficial for the body. It means when tabiat wants to eliminate or retain the body according to need. If there is no need of sweating, tabiat will not excrete out that sweat. That matters. I have put here one table. Factors and characteristics of sweating and effects on body. Excessive exercise and hot weather, weak retention power of body, imtilai mawad is very important point. Accumulation of matter, severity of disease or wasting diseases. What will happen? There will be excessive sweating or abnormal elimination. What will be the effect on the body? Weakness in the body. The person will feel weakness. Suppose you are running. Suppose your occupation is like that. You are working in a hot weather, and there is a more perspiration, or we can say in dehydration. The person will feel weakness. It is very much clear, and there will be dryness in the body. It may be in skin or it may be overall. If it is not managed, then it may cause various abnormalities in the body and coldness. Because dryness, why dryness will be there? Because if there is a more elimination of wet material from the body through excessive sweating, obviously there will be dryness in the body. Next point, weak power of elimination, excessive cold weather, less fluid content in the body, unduly viscid matter, partial opening of skin pores, that will decrease the sweating or due to abnormal retention. Effect on the body will be coldness, dominance of moisture, disturbance in temperament and humor, skin diseases, and effect on kidney also. Obviously, if there will be decreased sweating or there is no elimination of fluid matter that should be eliminated, it will get accumulate in the body and affect on the excretory organs like kidney, etc. Now it is proved that sweat matter is a waste of the body that is eliminated physiologically. If this waste matter gets retained in the body, leads to many disorders. Excessive sweating also causes some derangements in the body because sweat is composed of solutes and water. Earlier, they have discussed many physicians, and now it is proved. So, due to excessive loss of water as well as useful matters, the person becomes dehydrated and some other symptoms appear. They told the person will feel weakness. Now it is clear that if there is more perspiration, more sweating, the person will be dehydrated and feel weakness. Akbar Arzani and other Unani physicians explained that the retention of the matter which should be eliminated through perspiration causes certain diseases that may be structural. Accumulated matter suppresses the innate heat
we have discussed, resulting in the coldness or dominance of moisture in the body, which leads to derangement in the mizaj and akhlaq, and further leads to some skin diseases like khasra, banatul lail, etc. Depletion of matter which must be retained in the body causes coldness and dryness of the organ. Whatever the body should retain, the tabiat should retain, if it is excreting out in more amount or over, then its effect will be coldness and dryness, dominancy of coldness and dryness in the organ overall body. Sometimes due to excessive dryness, obstruction may cause obstruction and occlusion of the vessels, and there may be convulsion. Now, we will discuss the conclusion of this my talk, small talk and untouched talk. So I was very much happy to take this opportunity, or to take this topic for the discussion in front of Unani physicians virtually. So, conclusion: with the above discussion, it is found that the sweating is a very important phenomenon occurring in the body. Sweating plays an important role in cleansing of body as diagnostic tool, as we have discussed what type of diagnostic tools, how we can take a diagnostic tool, what are the characteristics we should see, and as a regime to treat the disease. All are doing this. Unani physicians discuss all aspects of sweating and its benefits, and it is our duty to generalize these type of writings, what they have written and they have discussed in front of all the fraternity of suppose modern medicine or Ayurveda and many other pathies. We should discuss, we should explore, and we should learn more and more, and we should read our classical literatures to find out these type of matters, and we should write about these type of matters to generalize or to propagate the knowledges for better understanding and for betterment of humankind. So last slide, the take home message: leave the body to sweat when needed, keep the body away from sweat when not needed. It is very specific characteristic of tabiat. When needed, tabiat sweats. Not needed, tabiat wants to retain the fluid, or tabiat tells you go and start the fan and go and take rest after playing, after feeling of weakness. Tabiat tells the body go and take rest, sleep, and everything has been discussed by the Unani physicians at a high level, and we must read. Again, I am requesting, including me, we should read all the classical literatures and generalize that writings. Thank you all. This is a reference page. And last, thanks to all and all organizing community. Thank you all to hear me. डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब ने पसीना की खुसूसियात, कितनी उसकी अहमियत, पसीना के अलामाती पहलू और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर बहुत तफसील से बहस कर रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم رخصت لیں، لیکن اس سے قبل ایک انتہائی اہم فریضے کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور یہ رسول ہے کہ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لہٰذا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے پروفیسر انصاری صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کلمات تشکر پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of organizing committee of this event. Let me first of all start by giving glory to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for making today's webinar a resounding success. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to our director, Professor Abdul Wadud sir, who is also organizing chairman of this webinar, for thanks to Professor Abid Ali Ansari sir, HOD Department of Mahiyatul Amraz and organizing secretary of this webinar, for constantly guiding us and providing us every kind of support to successfully organize this webinar. Thank you a lot, sir, for all your effort and help. I enlightening us with their commendable talk on their respective topics. Thank you. I wholeheartedly thank Dr. Sadiq Ali sir for moderating this webinar. You did your job very well, sir, I must say. I thank profoundly Ms. Kubra and team for providing technical support in this webinar. I extend my special thanks to great success. Thank you all. ایک بار پھر ان کی وجہ سے کچھ دقتیں آئیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آگے اس طرح کی دشواریوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو اسی کے ساتھ اس ویبینار کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. شکریہ.